Hi everyone, good afternoon and good morning to all of you who are watching us from the other parts of the world. My name is Khyati Rupani and I have as usual come on Wednesday at 4 p.m. Okay, this is a little late today. I know it took me 8 more minutes to come live because I wanted to make sure that the connections are absolutely fine. Right? Today we are going to talk about a lot of things which will determine कि आप लोगों का ये जो long weekend है ना वो कैसे जाने वाला है. How many of you, hi everyone, how many of you are traveling for the weekend? How many of you have good plans for the weekend? Or lockdown thanks to हमारे यहाँ तो I think we got a message from the BMC that मुंबई में तो होली पब्लिक या प्राइवेट खेलना बैन है, तो काफी सारे लोगों की छुट्टियां I think थोड़ी सी but of course we have to be careful and it is still the pandemic which is on. Hi Simran, hi everyone. आप लोगों में से हाँ I will save it as IGTV my dear. ये वीडियो मैं सेव कर लूंगी and yes I think we are quite a lot of us जो लाइव हो चुके हैं. आज का लाइव एज यूजुअल दो तरीके से शुरू करना चाहती हूँ. फर्स्ट इज दैट आप लोगों को सबको आई डोंट नो मैंगो की इंफॉर्मेशन जो है ना वो थोड़ी सी देनी है हमको. एंड दूसरा जो है दैट इज समथिंग वी कॉल एज माई रेसिपी ऑफ द डे. ठीक है, गर्मियां शुरू हो गई है, लंबा वीकेंड आने वाला है. इस वीकेंड को हम वेट गेन वीकेंड ना बना के वेट लॉस वीकेंड बना ले तो कैसा रहेगा, isn't it? So today's topic is about also making sure that you don't gain weight in the weekend. इंस्टाग्राम फॉलो करते रहे ना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे काफी सारी चीजें हम बताने वाले हैं ड्यूरिंग दिस वीकेंड विच विल सेव अ लॉट ऑफ कैलोरीज फॉर यू. हाय प्रीति, आई थिंक सिंगापुर भी लाइव हो चुका है. वी हैव क्वाइट अ नंबर ऑफ पीपल. तो आज मैं सबसे पहले अपनी रेसिपी बता दूं आप लोगों को. कैन यू सी माई इन्फ्यूज्ड वाटर रेसिपी फॉर टुडे? है ना, इट इज लाइक एन एक्वेरियम, अंडर वाटर एक्वेरियम दिख रहा है. आप लोगों को ये टी बैग दिख रही है, इट इज अ ग्रीन टी बैग. आप लोगों को काकड़ी दिख रही है विच इज खीरा और क्यूकम्बर. आप लोगों को पुदीना दिख रहा है एंड आई हैव एडेड अ लिटिल बिट ऑफ लाइम एज यू कैन सी द लाइम सीड्स. कैन ऑल ऑफ यू सी द वाटर फॉर द डे? दिस इज अ रेसिपी दैट आई वॉन्ट यू ऑल टू फॉलो थ्रू आउट द वीकेंड. ठीक है ना, व्हाट डू यू से? सो हम लोग ये करना चाहते, what we should do rather is that let me tell you, इसके 3 बॉटल पीना शुरू करो. Okay, starting tomorrow. All right, today is Wednesday, कल Thursday है. So Thursday, Friday, Saturday, Sunday and Monday, 5 दिन. Okay, whether we are junking up or no is another story, but आप शुरू करोगे अपना दिन इससे. 1 glass of it before you start your day, before you do anything, eat anything, make sure आप इसका 1 glass पी सकते हो. ओके, इसमें आप लोगों को काफी क्वेश्चंस होंगे कि क्या मैं ये पुदीना खा सकती हूँ कि नहीं, क्या मैं ये खीरा खा सकती हूँ कि नहीं. वेल, आई ईट एवरीथिंग एक्सेप्ट द टी बैग. ओके, मैं पीते वक्त ये नहीं देखती कि मेरे मुंह में क्या आ रहा है. Whatever comes here, it is all extremely hydrating. It is going to give you weight loss. It is going to help you in your digestion. So this is a infused water which I would want all of you to follow for the next 5 days at least. Okay, शुरू करा है हमने infused water से क्योंकि summers have started. If you see the temperature right now, even in Mumbai, it is quite hot. Okay, most of your weight loss does not happen because of one particular reason. Do you know that particular reason? 90% of the times weight loss becomes slow when enough water is not there. जी हाँ, can you believe it? काफी सारी डाइट्स हो जाती है, काफी सारी oh I'm plateauing, oh मेरा मेटाबॉलिज्म खराब है, oh I have this issue, I have that issue. But I think everything boils down finally to hydration. Okay, हमारे पास आज अगर छोड़ दे तो कल को गिन के you have at least 5 days before you can enter Holi, and after that also we are
क्वाइट, यस हमको डिहाइड्रेशन हो जाता है. आफ्टर दैट ऑल्सो वी आर आई थिंक क्वाइट free when it comes to junking up or partying unless you are having a home party. So my idea is आप लोगों को ऐसा कुछ क्यों ना सिखाए. इन 5 दिनों में हमने डिटॉक्स तो करा था, रिमेम्बर लास्ट वीकेंड. तो ये वीकेंड वेस्ट करने से या जंक अप करने से आई थिंक वी हैव अ बेटर ऑप्शन, एंड दैट बेटर ऑप्शन इज दिस टाइम. यू नो हम कहते हैं लर्निंग अ स्किल ड्यूरिंग लॉकडाउन इज समथिंग वी शुड डू. Why don't we learn how to eat a mango this weekend? कैसे लग रहा है आप लोगों को ये टॉपिक? अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लग रहा है then say yes, because I will then tell you कि आप लोग एक मैंगो अपनी डाइट में ऐड करके भी कैसे वेट लॉस कर सकते हो. Yes, if you are all about knowing how to lose weight or have any questions regarding mango, please put them in the comment section and I will be more than happy to help you. Okay, yes, Jia is saying yes, Pooja is saying yes, they all are yes, even Mithun is saying जी हाँ. आप लोगों को ये वीकेंड में I think let's make the next 5 days of your life a very rather say beginning of a very healthy setup. क्या आप लोग रेडी है ये हेल्दी सेटअप विथ मैंगो? आप लोगों को एक वेट लॉस रेजिम कराते हैं, है ना? करेक्ट गाइस? So I think what I would start off with is first of all tell you that mango is not the enemy. आप लोगों में से कितनों को लगता है कि mango is very high fat? If you think that mango is high fat, okay, आप लोग बोलोगे high fat in the comment section. You think mango is very fattening? Yes, Mithun, I will answer your question. प्रीति प्लीज टाइप योर क्वेरी, आई विल आंसर इट. बट अगर आप लोगों को लगता है कि मैंगो इज फैटनिंग, प्लीज लिखो इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी के येस मैंगो इज फैटनिंग. देन आई विल आंसर दैट क्वेरी ऑफ योर्स वेदर मैंगो इज फैटनिंग और नो. माई क्लाइंट्स आर वेरी स्मार्ट, दे ऑल नो. अनुजा इज टाइपिंग फटाफट. Okay, some people are saying mango is heaty. Okay, I will answer whether mango is heaty or no. But is your mango fattening is something that I want to first answer. Okay, okay. Anything that comes from a plant source. Okay, mango कहाँ से आया? Plant से आया, right? So anything that comes from a plant source, please remember one thing. It is always zero cholesterol. तो आपका मैंगो जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो 0 कोलेस्टेरॉल है. सेकेंड, इट इज नॉट एन ऑयल सीड. ग्राउंडनट ऑयल निकलता है, राइट? सो इट इज नॉट एन ऑयल सीड, राइट? सो इट इज अ प्योर फ्रूट. द फैट कंटेंट ऑफ मैंगो इज 0 grams. जी हाँ, मैंगो हैज 0 gram फैट. वन मैंगो हैज अबाउट 90 calories. One apple has about 90 calories. आपको comparison की एक for a comparison I've taken an apple. They both are 90 calories. Mango and apple also have somewhat similar fiber content. Okay, they also have a similar GI. You know what is a GI? This is something that my diabetics should hear. GI of mango is considered to be medium GI. ओके, मीडियम जीआई का मतलब ये है कि अगर आप उसे खाओगे तो आपकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी. यस गाइस, यू कैन हैप्पीली ईट मैंगो व्हेन यू आर ऑन अ डाइट, ऑलराइट? बट द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन द मैंगो बिकम्स मैंगो श्रीखंड. बिकॉज मैंगो श्रीखंड में आप क्या डालोगे? आप शुगर डालोगे, है ना? आप मिल्क, क्रीम या आप दही डालोगे जो हाई फैट. श्रीखंड के लिए मोस्टली इट इज द फैट वाला दही that is used. So then you become a very high fat, you've made a very high fat dish. उसमें आप मैंगो प्यूरे डालोगे, राइट? आपने प्यूरे करके सारा फाइबर जो है उसका कॉम्पोजिशन तोड़ दिया. So a mango श्रीखंड becomes a problem. Mango ice cream is made using again high fat milk, lots of sugar, preservatives. So that also becomes a bad idea, isn't it? टेल मी अबाउट मैंगो बर्फी, सेम स्टोरी है ना? और ये सारी चीजों में मिल्क फैट ये सब आ गया,
है ना. तो जैसे ही ये सब आ गया, these have started becoming resources which will give you cholesterol and fat. Everyone understood this concept. So बेचारा मैंगो बहुत ही अच्छा है. You don't need to get worried about the mango. In fact, if you're a diabetic and if you have to choose between a mango and a cookie or a mango and a biscuit, you will obviously have to choose mango. Okay, right? Excess water can okay, I will come back to you, Preeti, but let me talk about the mango first. All right. So mango, when it is put in your diet, all our clients are having mango. Now tell me about mango ras. Now you will say, I will not put sugar in my mango ras, amras जिसे कहते हैं. You will say, I am not going to put milk in my amras. I am just going to puree the mango and have the ras. Now, the moment you puree the mango, you have made the mango a very fine, a puree. Okay. So, same way, I don't know how to explain this to you, but you know, brown rice is considered healthy and white rice is considered unhealthy because उसमें से सारा fiber निकाल दिया हमने. So the moment you juice up something or the moment you puree something, you will go you will go downwards. Okay. आपने सारा फाइबर निकाल दिया तो इसका जीआई थोड़ा बढ़ जाएगा, इसकी शुगर अवेलेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी. द नेचुरल शुगर्स विल राइज अप एंड दैट इज द प्रॉब्लम. सो मैंगो रस ऑल्सो इज समथिंग दैट विल लीड टू अ लिटिल बिट ऑफ अ वेट गेन. Again, somebody has asked me, Shikha has asked me, mango lassi without sugar. Now see, lassi is made using dahi and that dahi lassi है, इसीलिए आपको thick लगेगा, इसीलिए वो दही में खूब सारा मलाई होगा. और अगर उसमें आप मैंगो डाल दो, चाहे कुछ भी डाल दो, योर लस्सी इज कमिंग फ्रॉम अ animal, right? An animal. So an animal product. So this will give you cholesterol. It will give you fat. Shika, I think the mango na is best enjoyed as it is. Sometimes I think we forget the simple joys of life. For me, just a bowl of mango cut as it is, उसके आसपास कोई disturbance नहीं है. I'm eating it just with my own meal and I'm not, there's no breakfast in the middle, lunch नहीं है, कुछ नहीं है, as it is एक mango खा लिया. Oh, it's ultimate, guys. What if we don't strain the mango ras? Is it still bad? Yes, it is. You are talking to me. Why do we give you dalia upma, while you're losing weight or you're a diabetic? And why do we tell you not to use rava? Because dalia ही अगर उसको और fine करते जाएंगे ना, so you will get a finer product. So the finer the food, okay. जितना आटा is considered to have a higher amount of nutritive value. Atta is said to have, हमारा whole wheat atta is said to have a GI also. Thank you. Atta is said to have a GI also, which is absolutely perfect. Okay. Whereas मैदा जो है, मैदा जो है, I have a certain things coming up for you. So here we go. Whereas मैदा जो है, okay, मैदा is going to give you, I think I'm done. और कुछ नहीं चाहिए. वो राजमा चाट बोला था लेकिन नहीं चाहिए. All done. That was Dakshita. My right, left, all hands. Okay, so I'm talking about a mango as it is. Okay, so रवा जो है वो finer होता है, right? So we are not allowing you rava upma when you are actively losing weight because it will digest faster. So your amras also will digest faster. It will make you hungry faster. And one mango on its own, if you see this, okay, cut, okay, one mango on its own has so much volume. Can you see the volume we have here? Right? So इतना volume है अगर mango में, और अगर आप उसका रस बना लेंगे ना, तो इसका रस पता है कितना होगा? इतना सा कटोरी. आप लोग कितने कटोरी खा लोगे? Someone like me who was fat would eat 5 to 6 katoris at one time. So unnecessary calorie intake बढ़ जाता है, right guys? Perfect. So now I hope you have understood why amras is not something that we should go ahead with. Second doubt everyone has is mango heaty? Mango is heaty. ये concept जो है, it probably is an Ayurvedic concept, but we would not understand it, I would say at a modern nutrition level. However, the best way to have mango is to soak it in water at least for 20 minutes because
I feel it enhances the taste. The water is absorbed by the mango. It makes the mango a little more juicier. Okay, so that saves us from getting any acne or any pimples. I don't feel the need for linking mango with your acne. In fact, I had said this the last time, but मैं फिर से एक बार बताती हूँ. In winters आपके पास carrots होते हैं. Carrots have a lot of beta carotene. Beta carotene is a precursor of vitamin A. Beta carotene से ही आपका vitamin A बनता है. So beta carotene carrots का store होता है winter में, which carries on till around March April. Liver में से वो beta carotene vitamin A बन के 3 to 4 months का vitamin A का कोटा हमारा आ जाता है. Summer में, that is why you have mangoes which will give you beta carotene, which will again stay with you till your winters come. So if you want to load up on your beta carotene, your vitamin A, if you're someone like me who is not very fond of milk in the diet, okay, आप लोगों का vitamin A, I think it is a done deal कि वो आपके पास रहने ही वाला है. All right. Somebody saying I'm allergic to mango. You are missing out on something so good, right? Then I have questions which are, what if you don't get fresh mango? You're having a tinned mango without syrup. So mangoes which are canned or tinned, they are mangoes which are stored in sugar syrup. भले ही वो जितनी भी पतली हो, it is stored in brine. Alright, I would say try and get a hand on a frozen mango or cut mango which is frozen and kept, because freezing does not have any effect on altering your nutritive value. Alright, now if I have said a no to so many recipes, मुझे तो मार ही डालोगे आप, है ना? So I would say कि why not try and make some interesting recipe using mango. Okay, so my first ingredient today, I am making a drink, okay, using mango. I have half a glass of coconut water. All right, in this coconut water, I am adding one spoon of, see, you can have any seeds, okay, in the house. I am adding magaj, which is pumpkin seeds, because I love the nutty flavor they give. Alright, you can add chia seeds to your mangoes, you can add garden cress seeds, but just about a little bit of color. Coconut water में मैंने ये डाल दिया है. Okay, अभी थोड़ा सा इसका अगर हमको मेंटेन करना है GI या ब्लड शुगर, who's your best friend? Cinnamon powder. ठीक है ना? Cinnamon powder अगर आप 1/4 टीस्पून इसके अंदर डाल देंगे, ये ड्रिंक के अंदर, do you see that? I've added 1/4 teaspoon of cinnamon powder to it. Cinnamon is said to be a diabetic's best friend. It is also going to help you lose weight. The compounds in cinnamon also make sure that आपकी blood sugar इतनी नहीं बढ़ेगी. Okay, after I am done with this, what I'm going to do is, I don't have sliced mangoes. She misunderstood and she was late today, so I'm going to slice this mango. Okay, I'm going to peel it off myself. Okay, and आपको जो साइज के पीसेस चाहिए, आप वो पीसेस अपने ड्रिंक में डाल सकते हो. Can you all see this? I think, yep, I think जिसको थोड़ा जो दिख रहा है, and I am adding, let me make it 2 with 2 slices at least, right? So it looks brilliant. There goes one more slice. The smell of mango is something I so love, है ना? If you like your drink cold, alright, so this is something, इसके अंदर, I think there is a big viral challenge going on, natural cereal, right? इसके अंदर, if you have pomegranate, please add so. इसके अंदर you can also add ice, okay, and just give it a nice stir, and this becomes my evening drink instead of a garam cup of chai, which I hate in the garmis. Okay, so here is
कोकोनट वाटर के अंदर मैंगो, cinnamon and थोड़ा सा nuts. I think this is a go-to drink at any point in time. Don't worry about your fat. Don't worry about your blood sugar. Just go ahead and sip this yummy drink instead of your evening chai. If you want to make it more colorful, add a little bit of any of this. पुदीना डाल सकते हो, काकड़ी डाल सकते हो. And this is a wonderful summer drink that should become a signature summer drink in your house. कोई गेस्ट आता है उसको भी हम आराम से ये दे सकते हैं, isn't it? Wow, so I think I made an amazing recipe for all of you. All right. So Alka is saying that she is joined late. Alka, I will put this video separately. What you have to do is you have to take half a cup of coconut water or half a glass of coconut water, put mango pieces into it, put ice into it. The brown powder you see is cinnamon powder, and I have put in pumpkin seeds, but you can put chia or any seeds of your own. Load it up with ice, and this becomes a beautiful summer drink that you can have instead of your tea. Now if I have to ask you about, somebody is asking me what about raw mangoes. Raw mangoes is kachi keri. I had done a reel on kachi keri. Okay, the reel was so amazing that I wanted to go and grab the kachi keri. Kachi keri is something that you should add in your salad till you get it. If you add it with onions, tomatoes, capsicum, cabbage, mix everything together, add a dose of your kachi keri, add lime. I hate adding a lot of salt, so I live up with lime. तो मैं lime डाल के वो salad घर में फिलहाल तो दिन में एक बार बनता है. Okay, can the mangoes be chopped finer? Yes, but as I said, the finer you chop or the puree done is something that I would not want, or I would not advise anyone to do so. Can a heart patient have this drink? Of course a heart patient can have this drink. Can we put seeds mix? जी हाँ, आप seeds का mix भी डाल सकते हो. Vaishali says that it looks very very yummy. Yes, I am. Now Leena is saying that कैरी का अचार खा सकते हैं कि नहीं. अचार बनाते वक्त हम पहले क्या करते हैं, हम पहले तो कैरी का मर्डर कर देते हैं. सी अचार बाय नेचर इज समथिंग दैट वाज मेड टू प्रिजर्व. ओके, एंड नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स मतलब जो हमारी शेल्फ पे सालों साल रहे, है ना. वी टेक प्राइड इन talking about achar. Before I start achar, I think हमारे पास थोड़ा questions है. I have acid reflux, can I have it? रणवीर, बिल्कुल आप ये पी सकते हो. इनफैक्ट cinnamon powder की जगह थोड़ा जीरा पाउडर डाल दो. You will feel amazing. Don't forget to add a little bit of ice to this drink and you shall be good to go. Right? Now I am talking about achar. जब अचार की बात आती है तो I must tell you that achar is something that is made to preserve. Okay, preserve जब हम किसी चीज को करना चाहते हैं तो हम उसमें natural preservatives डालेंगे. Natural preservatives क्या है पता है? Salt is natural preservative, sugar is a natural preservative, oil is a natural preservative. आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव अगर आपको पता करना है कौन से है, आप कोई भी चीज या कोई भी बिस्किट या कोई भी चिप का पैकेट उठा लो, आप पीछे पढ़ लो, आपको 4-5 नाम दे देंगे एंड देन दे विल से क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स एडेड. सो दोस प्रिजर्वेटिव्स लकीली वी डोंट यूज. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मर्डरिंग द कैरी. हम कच्ची कैरी लेंगे, हम उसमें खूब सारी हल्दी और खूब सारा नमक डाल के उसे सुखाएंगे. Right? This process kills a certain amount of vitamin C, I mean almost all of it, and after this is done, we put the achar with more namak, more oil, more masalas, and that is the end of anything nutritious. So achar को achar की तरह खाना है अगर, make sure you eat very less of it, make sure you don't eat it very often, and you will be good to go. All right, Shikha Goenka Agarwal is asking, does it cause inflammation or swelling? बिल्कुल नहीं शिखा. इनफैक्ट जो आप रोज प्रिजर्व्ड या पैकेज्ड खाना खाते हो या कभी रेस्टोरेंट फूड भी खा लेते हो, दैट विल कॉज यू मोर इन्फ्लेमेशन एंड दैट विल कॉज यू मोर स्वेलिंग दैन दिस. ओके, I am now going to bring about how a diabetic can and a weight loss patient can include mango in their diet. Okay,
मैंगो को आप अपने फ्रूट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी ऑन अ प्रॉपर लाइफस्टाइल रेजीम. अगर आप ये समझोगे कि बिकॉज ख्याति ने बोला है आप मैंगो खा सकते हो, तो भाई हमारा सवेरे का ब्रेकफास्ट पूरी आलू हो गया है ना. हमने पूरी आलू के साथ कल मिठाई आई थी घर में होली वाली, वो एक पीस खा ली. बट वी आर ईटिंग मैंगो मिड मॉर्निंग एंड देन वी आर शिफ्टिंग टू पुरन पोली फॉर लंच बिकॉज होली है. आई थिंक एटलीस्ट वी गुजरातीज, अ फ्यू ऑफ अस एंड अप मेकिंग पुरन पोली एंड आलू की सब्जी. Then you will end up eating कचर पचर in the evening and then you will say अभी स्विगी करते हैं रात को. तो जी नहीं, आपका ये मैंगो का जो फसाड है ना वो बिल्कुल काम नहीं आने वाला है. So first and foremost, if you are looking at losing weight, the rest of your diet has to be proper. Okay? If you are a diabetic, the rest of your day has to be absolutely proper. इसीलिए what we have done is just for all of you who get scared of dieting, who are not very sure about मेरा डायबिटीज मैनेज होगा कि नहीं, और इस साल भी आप लोगों को बाय बाय करना है मैंगो को, मत करो मैंगो को बाय बाय. 10 दिन का एक डाइट प्लान निकाला है हमने विच वी कॉल मैंगो खाओ पतले हो जाओ. इट इज देयर ऑन आवर स्टेटसेस. Once this live is over, take a look at it. In fact, I will ask my team to also put it in the comment section over here. आप लोगों को वो प्लान देखना है जाके. हमने आपके लिए वो प्लान बहुत ही लो रेट्स में रखा है. You will also get a chance to see how balanced nutrition works and you will get a 10-day diet chart in which we will make sure that we are adding that mango and also aligning the rest of your day. It is not a big commitment. It is a 10-day commitment. Starting tomorrow, your 5 days are already going to be there till Monday. In fact, yes, on Instagram, we've already got it. On the Facebook page also, we will get it very, very soon. You can see that we say that in 10 days, you can lose up to 3 kgs of weight along with that mango added. तो यार अगर नया स्किल सीखना है, अगर आप लोगों को ये लगता है कि नहीं, यू शुड बी यू आर एट होम इंस्टेड ऑफ नेटफ्लिक्सिंग, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दैट रबिश, व्हाई डोंट यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. 10 दिन के लिए प्लीज ये करो. किस्मत पूछ रही है व्हाट विल आई डू फॉर PCOS. किस्मत, यू प्लीज स्टार्ट. अगर डर लग रहा है फॉर अ लॉन्ग कमिटमेंट, आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद अ 10-day डाइट फर्स्ट and you should then see how you are proceeding. ये वाली 10-day डाइट आपको मैंगो की भी दोस्ती करा सकती है ना. कितने आम खा सकते हैं एक दिन में? पूजा, एक दिन में एक आम खाना शुड बी अ वाइज थिंग. बट अगर आपका दिन का डाइट ठीक नहीं है ना, तो वो एक मैंगो भी आपको काफी भारी पड़ सकता है. सो यू बी वेरी केयरफुल. इट इज नॉट अबाउट वन पर्टिकुलर फूड इन योर डाइट. इट इज द रेस्ट ऑफ द डे एंड इट इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. जैसे मैंने कहा, आपका वेट लॉस शायद हाइड्रेशन की वजह से भी अटक सकता है. अब मैं बात करती हूँ मैंगो एंड PCOS की. अगर आपको लगता है कि मैंगो खाने से आपका PCOS और बिगड़ जाएगा, तो आप पार्शली राइट हो. अगर आप मैंगो श्रीखंड, मैंगो बर्फी, मैंगो पापड़, मैंगो मिल्क शेक, मैंगो जूस खाने वाले हो या पीने वाले हो, मैंगो आइसक्रीम, मैंगो विथ क्रीम, ब्ला 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 करने वाले हो, देन इट इज अ बैड आइडिया. प्लीज डू नॉट even indulge yourself in all these dishes. First and foremost, learn to enjoy the fruit on its own and solve the rest of your day. किस्मत. So किस्मत, what I will do is I'll ask my team to help you. उसके ऊपर ही देखो, आपकी कमेंट के ऊपर I have given you a link on the 10-day diet plan. Okay, Ashraf is saying please share one mango recipe. Ashraf, I already shared one mango recipe, or I will tell you that tomorrow I will be sharing one more recipe in the status. So जो Instagram follow नहीं करता हमको, please follow us on Balanced Nutrition Instagram, क्योंकि कल के status में हम एक बहुत अच्छी मैंगो रेसिपी डालने वाले हैं और परसों भी. तो 2 दिन हम तो मैंगो रेसिपी डाल देंगे. हम हमारी डाइट चार्ट का शायद स्नीक पीक भी डाल दें और फीडबैक भी डाल दें कि कैसी डाइट चल रही है. Okay, so you are right now getting, I think, today's day to take that particular 10-day program and get mango added in your diet. You will learn a new skill also, and you will end up losing around 2 to 3 kgs, which is a win-win, isn't it, guys? Right? So what I will now start with is mango in diabetics and a mango in somebody who is a pre-diabetic. Okay? मैंगो का हर एक डायबिटिक को शुगर से ज्यादा ये ध्यान रखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर खाने का GI क्या है. GI इज ग्लाइसीमिक इंडेक्स. व्हाट इज ग्लाइसीमिक इंडेक्स?
अगर नॉर्मल भाषा में आपको समझाऊं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये है कि अगर मैंने कुछ भी खाया, ओके, इफ आई एट एनीथिंग, इट्स गॉन इन माई माउथ, इट्स गॉन इनसाइड, now it will start releasing sugar, isn't it? It will start digesting. The faster anything or any food releases sugar, the higher the glycemic index. Okay, white rice का glycemic index ज्यादा होता है ब्राउन राइस से, क्योंकि ब्राउन राइस में फाइबर है. तो जितना ज्यादा फाइबर उतनी आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम. ओके, नट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ oil, right? So nuts have a lower glycemic index, but they are high calories, so be careful. I will also say the same about vegetables. Kakdi has a low glycemic index. Tomatoes, low glycemic index. Banana, medium glycemic index. Rava, high glycemic index. Maida, high glycemic index. Why rava and maida are higher on glycemic index? Because they are finer. So that is why amras will have a higher glycemic index than your आम. नेक्स्ट इज, आप लोग अगर आम खाना चाहते हो तो आप लोगों को इन बिटवीन मील्स थोड़ी जगह करनी चाहिए. यू विल प्लेस योर मैंगो एज योर इवनिंग स्नैक और योर मिड मॉर्निंग. इसको ब्रेकफास्ट के साथ मिक्स नहीं करना है, इसको लंच या डिनर के साथ भी मिक्स नहीं करना है. If I were you, I would eat mango with one badam, I would eat a mango with one akhrot, or I would eat it with one katori of plain non-fat, or even if it is low fat yogurt, I'm fine, but no flavors. Okay, so Anuja is saying you're too good. Really, thank you. Right, so when you are having a glycemic index issue, that is how you deal with the mango. मैंगो को प्लीज एज इट इज खाना है, बड़े पीसेस खाने हैं. मैंगो आपको इन फैक्ट विल गिव यू कॉपर, विल गिव यू मैग्नीशियम, विल गिव यू beta carotene, which will give you a very good glow and your eyes will also look excellent. मैं तो भैया मैंगो खाती हूँ. Clients at Balanced Nutrition also are eating a mango. If you're still unsure, what you should do is you should get cracking and go and see that what do you say, mango program that we have put on top. Okay. Now what I'm going to do is I'm going to sip on my mango drink while I wait for some questions from your side. Thank you everyone जो मुझे गुड गुड बोल रहे हैं. लेकिन अगर आप लोग फॉलो नहीं करते हो ना जो मैं बोल रही हूँ, तो गुड गुड बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फॉलो व्हाट आई से, isn't it? So now I think I'm not getting any questions, am I? Starting the 10-day diet with mango. Yes, Prachi, very very good. And Prachi, but this time follow the diet, okay baby? Coconut water and mango. I have one question जो मैंने प्रीति का आंसर नहीं किया. प्रीति is asking me about water, right Preeti? I'm just reading your question. I heard that excess water can affect kidneys. Is it true? So Preeti यार see excess तो vitamins भी हो सकते हैं जिसको हम hypervitaminosis कहते हैं. How much is too much is something that we have to figure out. Okay. If I think as far as we are concerned, okay, we don't even end up having 3 bottles of water in a day, which is 3 liters. So I would in fact say that until and unless आपको किडनी कंडीशन का कोई इंटिमेशन नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप ठीक ठाक हो, आप हेल्दी हो, डोंट try and read too much into Google or too much into all your other resources, that because they are too generic. So I don't think excess water can have a problem on the kidneys. In fact, it will keep your kidneys clean. And excess क्या होता है is something that is very varying, the degree of excess. All right, right. I think yes, I have Kismat ka answer. Done. For how much time can we keep the mango pieces in coconut water? इतना अच्छा ड्रिंक बना के प्रीति यू वॉच इट इन द IGTV, बट यार मिशन आहार, if you what do you say,
if you can keep these mango pieces in coconut water and not have them immediately, why, I would be so happy to drink it. But yes, keep it for 10-15 minutes and drink it, isn't it? For how much time can we keep the mango pieces in coconut water? You can keep the mango pieces in the coconut water for at least 15 to 20 minutes. What is the quantity of mango per day? I would say 5 mangoes or 4 mangoes in a week if you're a regular person who is having a dietitian. And if you're not having a dietitian and if you're overweight, 2 mangoes, because आपकी diet सही नहीं है ना? So I would say that please be on a diet first, understand how much mango, understand where to put it, and then you can enjoy at least 1 mango for the next, at least 6 days in a week. Now, quantity restrictions, yes, मैंने आपको वही बताया अभी. I think yes, we are pretty sorted. We have the 10-day program on the BN app. But I have got many requests to do this program just the way we had done our cleanse. So what I will do is I will come back to you after figuring out whether this can be done without the Balanced Nutrition app. But until then, I think we are good to go and we should be absolutely, yes, daily consume mango. I just answered that, Miss Ria. जब ये IGTV पे लग जाएगा आप प्लीज देख लेना. I will come back soon, but yes, ये 5 दिन वेस्ट नहीं करना. ये 5 दिन please ensure that you are enrolling in the 10-day diet plan, getting your mango sorted, your quantity sorted, in the bargain lose some weight. And yes, this 10-day plan is shutting tomorrow for enrollments because we have to start the program for everybody who has already enrolled in. All right, bye guys, take care.